And we won't go into the. सुपर संडे डबल धमाका। लेकिन पहले हम बात करेंगे डे गेम की। सो हेलो एंड वेलकम टू गेम नंबर 45 बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड लखनऊ। और मेरे साथ आज शो में जुड़े हैं अभिजीत देशमुख, वेदा कृष्णमूर्ति एंड जयदीप मुखर्जी। स्वागत है आप सबका। धन्यवाद धन्यवाद जी। आज तो आपका पार्टनर है, आज तो आपका पार्टनर है साथ में, आज तो आप फाड़ के रख देंगे। चलिए आइए। इसलिए मैंने पूछा शुरू कहाँ से करूं। अभिजीत कल मुंबई जीता है, अभिजीत के डांस से शुरू करें। कल वेदा थी नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वेदा ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ, मैं चाहूंगी अगर प्रोड्यूसर सुन रहे हैं तो प्लीज पहले वो वीडियो ही प्ले कर दें। अगर वो नहीं करेंगे तो बीच में किसी भी टाइम बीच में प्ले कर दे जब उनको लगता है। लेकिन वीडियो मैं उनको बोलूंगी जरूर कि वीडियो प्ले करें। लेकिन अगर नहीं करते तो वेदा सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि कल आप शो में नहीं थे। सीएसके का मैच इवनिंग का है, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहिए। धोनी इज बैक, उस डिसीजन के बारे में क्या रिएक्शन है आपका? Well, to be honest, I was pretty surprised that it happened when I saw the thing. First reaction was whether to see whether the news is authenticated or not, because I for a second thought, people might be playing a prank, and then I saw Cricket for posting it. Then I was like, okay, no, it's not a prank; it's actually happening. Maybe they're trying to work things out in a different way and see. Maybe. Dhoni saw that Jadeja has the capability of doing well as a captain, but since if he's gone and requested saying that it is affecting my game, and with the kind of form Dhoni is in, so I don't see why he shouldn't accept it, and it is written also that as a greater perspective for the game that they've done it. So I'm not I don't have like a big reaction kind of a thing. If someone else would have named as captain apart from Dhoni, probably I would have had a bigger reaction to it, but I think it all looks pretty cool and fine now. प्रीटी कूल। और मेरा भी यही मानना था, लेकिन शायद वो सीएसके के स्टार्स बदले। आगे वाले 6 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कल एक और गेम हुआ था वेदा जिसमें मुंबई इंडियंस जीती थी और अभिजीत ने बोला था कि वो डांस करेंगे और ऐसा उन्होंने करके भी बताया है। तो मैं मेरे प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वीडियो प्ले करें ताकि शुरुआत हम थोड़ी पॉजिटिविटी से करें। मुंबई इंडियंस फाइनली गॉन। Thank you. Fantastic. What a performance! What's he doing here? अब इसको जयदीप, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ या माइकल जैक्सन 2.0 क्या नाम देना चाहेंगे? This is Hrithik Roshan standard. Oh, super. See, ये क्रिकेट सिखाता है. I know your dancing capability, but the way RCB is playing now, you're far away from dancing. It doesn't really matter. They don't have to win or lose for me to dance. I still dance whenever I want to. That's true. But Abhijit, hats off. क्रिकेट से ये चीज सीखने को मिलती है। आप हारने के बाद जीतते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखने को मिला। आपने जो बोला वो करके दिखाया और फाइनली मुंबई इज बैक। Thank you, but unfortunately I was not pressure. Hrithik has delivered. Tiger Shroff is waiting. He's rehearsing as we speak. Unfortunately, कल मैच में देख नहीं पाया, to be honest. I think that was too much. So next कोई मैचेस मत देखना आप मुंबई के, कोई मत देखना। मुंबई जीत रहा है, आपके देखने के बिना जीत रहा है। चलिए, दामिनी ने भी ज्वाइन कर लिया है। दामिनी वेलकम। और अब शो को आगे लेते हैं। वानखेड़े में मैच खेला जा रहा है, मैच नंबर 45 बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स। दोनों ही टीम जो है वो पिछले मैचेस जीत के आ रही है। लखनऊ 2 मैच लगातार जीती है। यहाँ से इस मैच से क्या एक्सपेक्ट करेंगे जयदीप? वानखेड़े में पहला वो गेम जो डे गेम खेला जा रहा है, इससे पहले सारे जो थे वो नाइट गेम्स थे। सो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जी, मुझे पिच में
पिच देखा अभी पिच रिपोर्ट पे केविन पीटरसन कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि थोड़ा बेयर दिखा मुझे, what we were expecting, that even sprinkling of grass, first it was green, then it was the grey grass, the brown grass that we're used to, which is a placid wicket, and then now slowly we're just seeing a little bit of gaps, lot of soil that you can see. It was a faraway shot, but still you could make out that grass was missing, and which is why I think Lucknow won the toss and elected to bat, as we've seen the trend is missing. So I think it's a good thing. Everybody now feels it's probably first up is better. With the sun pelting, there's obviously no question of dew. So you bat first in the best of conditions, and then little bit of wear and tear, spikes, ball falling, running, jo bhi hai. In the second half, it will get slower, lower, and that's when that's when the overseas players struggle. And also sometimes the international players struggle because they play on such good wickets with the ball coming onto the bat. They struggle with that. So I think this is more about giving them conditions that they are not used to, rather than what we would. Let us have the best of the batting conditions and let them struggle a little bit. Absolutely. Whether Lucknow have won the toss and elected to bat, जैसे जयदीप ने कहा, और एक चेंज भी है. कृष्णप्पा गौतम अंदर आए हैं, आवेश खान को रेस्ट दिया गया है, वो उनको बैक टू बैक गेम्स देके उनको इंजरी फ्री रखना चाहते हैं. Krishnappa Gautam plays for which state? आवेश खान, which state? इसलिए मैं वेदा के पास गई थी. मैं जाने वाली थी अभिजीत के पास, लेकिन कृष्णप्पा गौतम आए हैं, इसलिए वेदा के पास जा रही हूं. कर्नाटका. अच्छा, वेदा की स्टेट. इसको सिंपल कर देते हैं, वेदा की जगह से खेल रहे हैं. वेदा, इस मूव को हम कैसे देख रहे हैं? राइट मूव, वानखेड़े में डे गेम, कृष्णप्पा गौतम इन. Well, he's done well with whatever little opportunity he's got with the ball, especially. We saw that one game where he came and bowled really well in the power play, and then he bowled in the middle overs. He got about 2 to 3 wickets. Plus, at the same time, if we are considering that there's going to be wickets going to get slower a little bit, and we did see yesterday in the Mumbai game, even though it was a night game, spinners kind of had that ability to control the game. They were not going for that many runs. So if you bowl in the right area and things, it will be very useful for you. And seeing Delhi team, how Akshar and Kuldeep Yadav is done, especially with the spin department, I think it must have given Lucknow an idea that maybe we can try this. He's done well in a given opportunity, and not to forget, he's a very good bat. It's just that he's been pushed up, I think, way too higher number. Like number 3 is too high for him. But if you use him as a finisher, he's got the skills. He's got the skills to hit big, and he's done for Karnataka a lot of time, and even like club games and KPL. He has 100 in KPL. So those kind of a thing. It just can't say, like, whatever format or whatever level you play, and if you have the capability of scoring 100 in a T20 format, that means you're skilled as a batter. Absolutely. And if they utilize him properly and use him, I think that extra 10-15 runs what he can produce with the bat will be a huge plus, considering the batting first today. And I think as a bowler, he's come back really well with how he's got. Didn't get an opportunity last year. Previous year, we saw that one over he went for 5 runs where he was bowled the 20th over. Until then, he was fine. So I think to come back from there, and the way he's going, he's very strong mentally. That's what I heard. I hear from the boys who play with him. They say that, they call him Budgie. That's his nickname. They say Budgie's got really strong, here. That's how he comes and produces those game He looks changing. it. He looks it, because he's one guy, Veda, who hasn't not had a proper run in any IPL team. Exactly. He plays once, it's out two. Plays once, it's out two. But you He look can at be the a game others, the changer. newcomers. Yeah, he's got a 60 ball 90 in a 4-day game against a touring team. So that's how well he's good. That's how well he can bat. That's how explosive he is with the bat. So all I'm saying is, these sort of players, he's been in India for such a long time. You need to give them a proper run. Give them 5 games on the trot. Look at Shaukin. Look at the others. They're getting 4-5 games on the trot. If he gives 4-5 games on the trot, you will not be able to leave him out of the 11, because he's actually a 3-dimensional cricketer. He's coming in as 12th man to field in every game. If he's 12th man, he's fielding. Obviously, he's fielding and catching is very good. Batting hai, bowling hai. So superb cricketer. And another thing is, like with Baji, what happens is that he is someone who can change the game very quickly, and he's a late bloomer.
he made his Ranji Trophy debut or like senior cricket debut when he was like probably 27, 28. So it's in the last 2-3 years is what he's playing. He didn't play Ranji Trophy before that. So he didn't play when he was 23, 24. So he's come into the system, after he's matured. So maybe that is why people say that he's very strong mentally, because once you cross that He's been age, through a lot. once you cross that age, you kind of figure out that Mature. what needs to be done. So I think that maturity kind of has helped him in domestic cricket. He's been regular with the A squad. He's done really well. They're both with bat and ball. So I feel he's kind of a game changer if utilized well. And since Rahul is around and he knows him personally in and out, they play together for Karnataka as well. So if Rahul can utilize him in a greater aspect, I think that can be a difference for Lucknow. How Gujarat is doing well with their finishers. I feel he can be one of them for Lucknow. Nice. और विकेट भी अब स्लोअर हो रही है और यहाँ पे गौतम को खिलाया अगेंस्ट डीसी जहाँ पे 3 लेफ्ट हैंडर्स भी है, अक्षर पटेल है, ऋषभ पंत है, डेविड वार्नर है, तो दिस इज अ राइट टीम टू प्ले हिम विद, जैसे आपने कहा। लेकिन सामने वाली टीम के पास भी एक स्पिनर है, कुलदीप यादव। अभिजीत 4 बार वो मैन ऑफ द मैच बने हैं, चारों बार दिल्ली जीती है, गोल्डन पीरियड चल रहा है। इतना 2 साल उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, कोई मैच नहीं खेला, इन एंड आउट रहे टीम से, इंडिया टीम से भी बाहर हुए। इतना टफ फेस के बाद अब कह सकते हैं कुलदीप की वापसी हुई है, और वापसी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। यही कहते हैं ना, ये कुलचा की जोड़ी जो थी इंडिया के लिए एक टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट थी। उनसे क्या उम्मीद करेंगे आज? उनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। आई थिंक काफी अच्छे फॉर्म है। आई थिंक 17-18 विकेट्स ले चुके हैं। एंड अगेन आज जब फर्स्ट बॉलिंग कर रहे हैं डीसी, तो आई थिंक फायदा हो सकता है। डेफिनेटली इज इन काफी अच्छा फॉर्म है। सी व्हाट आई फील इज कि एक तरफ से यजुवेंद्र चहल भी काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, पर्पल कैप ऑर्डर है, तो वो जो थोड़ा एक इंस्पिरेशन मिलता है, ऑल्दो ही इज इन अपोनेंट साइड, बट वो इंस्पिरेशन मिलता है। तो आई थिंक ही हैज ग्रैब्ड दैट कम एट द राइट टाइम। आई थिंक मैं पहले से कह रहा था कि इज अ वेरी गुड टीम, एंड आई थिंक नाउ इज द राइट टाइम टू पिक अप द gas for them, and कुलदीप यादव वो एक्स फैक्टर बन सकते हैं, क्योंकि बन रहे हैं रादर, जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में मास फंसा देंगे, विकेट ले लेंगे। आई थिंक जिस टीम में बॉलर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो आईपीएल ज्यादा जीतता है। तो आई थिंक कुलदीप यादव एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करेंगे यहाँ से, क्योंकि दिल्ली को अभी भी कुछ मैचेस जीतना है। उनके लिए अभी भी इतना इजी नहीं होने वाला है। तो कुलदीप यादव को एक इजी बनाना पड़ेगा। जैसे हम देख रहे थे कि चहल राजस्थान के लिए कर रहे थे, मैच में वी वर एक्सपेक्टिंग कि 3 विकेट ले रहे थे, 4 विकेट ले रहे थे। तो उस प्रकार से कुलदीप यादव कर रहे थे, और इस प्रकार से अगर बॉलिंग करते जाएंगे तो आई एम श्योर दिल्ली विल डेफिनेटली रीच द प्लेऑफ। ट्रू अभिजीत। दामिनी, दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स इज द ओनली टीम जहां पे स्पिनर्स ने ज्यादा विकेट ली है पेसर से। सो पेसर्स का वो एरिया है जो एरिया ऑफ कंसर्न है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, स्पेशली फॉर्म ऑफ शार्दुल ठाकुर। जी, शार्दुल ठाकुर थोड़े से ऑफ कलर लग रहे हैं। पेसर्स में तो कुलदीप यादव को देख के लग रहा है हर मैच ही बिल्कुल जैसे उनके करियर का आखिरी मैच हो, बिल्कुल उस माइंडसेट की तरह आ रहे हैं। कभी भी कैसे भी बॉल पकड़ा दो, आके बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। शार्दुल ठाकुर थोड़े से ऑफ कलर लग रहे हैं, पता नहीं डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उनका एक क्रूशियल रोल रहेगा। जैसे अगर उनको आप पावर प्ले पे यूज करें, पावर प्ले में अगर वो एक विकेट चटका सके तो बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा वो दिल्ली के लिए। जितनी जल्दी हो सके वो अगर अपना फॉर्म ढूंढ पाए तो दिल्ली के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जयदीप, सेम क्वेश्चन के साथ आपके पास आती हूँ। पेसर्स की फॉर्म वरी है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि काफी लोग ले रहे हैं कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, लेकिन जिस दिन वो नहीं चलेंगे, शार्दुल ठाकुर की फॉर्म, बाकी पेसर्स। Yeah, they are missing Nokia big time, and they retained him thinking that वो fit हो जाएंगे, लेकिन अभी वो मिलन ने रबाडो को छोड़ दिए। They're feeling it to the bone. There's no doubt about it. But this is also the time where I think the fast bowling का जो dominance था, उसका time शायद थोड़ा सा हट रहा है। You can come in with cutters and slowers. We saw Nokia, Rabada with their pace, they blow you away. We don't have, Delhi doesn't have too much of that. Shardul is not an out or 145 bowler.
He's also a guy. He's probably a better test match bowler. He's a good package in white ball cricket because he can bowl, he can field, he can bat. But if you just talk about his bowling skills, there are about 6 or 7 guys who are ahead of him in T20 and one-day cricket because of the skills that they need for that version. In test match cricket, it's different because the red ball does a lot. He swings the ball. He's always in the game. His test ball tappa is very good. So all that is okay. It is a cause of worry. So we could see now the spinners playing the more dominant role, the more attacking role. That time of the IPL is here. And the fast bowlers playing a more holding role. वेदा, दिल्ली कैपिटल्स, ऋषभ पंत कैप्टन तो वो हैं ही, लेकिन द बैटर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं. सामने है केएल राहुल जो एज अ बैटर भी अच्छा कर रहे हैं. कैप्टनसी उनकी बहुत अच्छी हो रही है. जो भी मूव्स करते हैं वो सक्सेस हो जाता है, चाहे वो बदूनी के वो बॉलिंग हो जिसमें सूर्य कुमार यादव की विकेट मिली थी. लेकिन यहाँ पे पिछले मैच में थोड़े फ्लॉज हुए थे ऋषभ पंत की. शायद वो जो शॉर्ट ऑफ रन्स नजर आ रहे हैं एज अ बैटर वो कैप्टनसी में इफेक्ट कर रहा है. कुलदीप यादव को 4 ओवर नहीं डलवाए थे. कितना इंपॉर्टेंट है ऋषभ पंत के लिए अपना नेचुरल गेम खेलना और कैप्टनसी को भी अटैकिंग रखना? I mean, see, there are two kind of players. I feel one who is a natural leader, regardless of how they're doing in a personal way, like whether they're contributing to the game or not. But they know for the fact that they have it under control, just because they have captain. So we see that those kind of captains, and there is a different set of captains where their personal scores and wickets kind of reflect with the way they lead. So I think Rishabh Pant is someone who grows in with confidence when he is doing well, and at the same time when team is doing well, it kind of looks like everything is working out really well. So like we've been speaking, Delhi had a wonderful team last couple of years. They had an amazing bunch of cricketers who were match winners, who used to win games single-handedly. That link is kind of missing. They have a good squad, but they have like a few puzzles which is missing, which can eventually make it into a winning squad, or a squad how we used to look at Delhi and say, wow, this is a great squad. So you need to play True. really good cricket to beat them. So those kind of puzzles are missing, and we saw that Rishabh Pant tried to play an anchor role, which kind of didn't work for him. Then he went all out in few games, which kind of didn't work for him. I think he has to come midway in a way, saying that when I bat, I'm just a batter. Let me not think like a captain. But when I'm in the field, when I'm keeping or things like that, let me think about captaincy then. So eventually, whether he scores even 30 runs or 40 runs with 20-25 balls will make a huge difference. But at the same time, if he's going to go 40 balls, 45 runs, he's not going to gain confidence because he's not that kind of a player. We've seen how he plays in test matches. He goes reverse sweeping, fast bowlers and stuff like that. So he knows that boundaries are the ones which is going to give him confidence. So I think he has to come middle ground and say that this is what my natural game is, and let me continue playing it regardless whether I score or not. If he goes out of his skin to play a different role, it is not going to help him as a leader, and it's not going to help the team as well. The best part is that he has David Warner. Prithvi Shaw is doing really well at the top of the order. So he doesn't have to be like, I have to do everything for the team. You have guys who are That's doing a the great job. point. So you need to do your job so that the team looks good. And with Rabada and Nokia, they had a formidable bowling attack, like how we see Rajasthan now, one of the best bowling attacks. I think Delhi was one of the best bowling attacks in 2 years, and that is why with Ashwin and Akshar, they did really well as a bowling unit. That is why they were able to win games. Here we saw Ashwin also. every team has someone who can bowl 150 plus, and that is where that was the X factor, and Delhi was certainly missing Nokia because of that. So I feel Yeah. they have to go to their resources and say, this is what it is. Let them give the leverage of playing their national game. Whether they succeed or not, it's fine. We cannot judge with 1 or 2 games. Give them a longer ropes. Let them play their roles. Once the roles are clear, I think they'll be able to do better. I रोल्स think डिफाइन करने Rishabh's होंगे. problems, Rishabh's problems start if David Warner gets out early. If he's Exactly. there in one end and playing 12, 13, 14 overs, then life is good for him. Problem is he doesn't know. So Prithvi plays his way and the rest of the guys play his way. There's no Shreyas Iyer now who can somewhat play David Warner role or Shikhar Dhawan's role if Shikhar got out last year. So he doesn't know. His problem starts when David Warner is out.
रोल्स डिफाइन करने होंगे। नंबर 3 और 4 जो हैं मिचेल मार्श और ऋषभ पंत को समझना होगा कि क्या उनका रोल है, क्या सिचुएशन डिमांड कर रही है। लेकिन अभिजीत आपके पास आऊंगी, लखनऊ सुपर जायंट्स सॉर्टेड टीम लग रही है, ओपनर्स फॉर्म में है, डिकॉक ने पिछले मैच में रन किए, 2 सेंचुरी राहुल के पास है, नीचे बदोनी अच्छा कर रहे हैं। नंबर 3 की एक प्रॉब्लम है कि आप कभी स्टॉइनिस को भेज रहे हैं, कभी आप हुडा को भेज रहे हैं, दोनों में आपको कुछ ज्यादा रन्स नहीं मिले। क्या करना होगा कि क्या आप हुडा के साथ ही जाएंगे, या जैसे कि वेदा ने कहा दिल्ली टीम के लिए कि बैक करिए, उनको 2-3 गेम दीजिए। सिमिलरली लखनऊ के साथ भी किसके साथ नंबर 3 पे जाना चाहेंगे और क्यों? आई थिंक बैक करना चाहिए, आप किसी को भी भेजिए, आप हुडा को भेजिए या स्टॉइनिस को भेजिए। मेरे ख्याल से स्टॉइनिस को भेजना चाहिए क्योंकि वो मैच विनर है। एंड आई थिंक इट डजंट हैपन कि आप उनको कम से कम 3 से 4 गेम दीजिए ना, उनको फिर पता चलेगा। कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे होते हो, कभी सिचुएशन में आप बैटिंग सेकंड कर रहे होते हो। तो वो जो डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट वेन्यूज पे जब खेलते हैं तो उसका भी एक इफेक्ट होता है। एंड आई थिंक स्टॉइनिस काफी सीजन प्लेयर है अभी, तो वो अगर नंबर 3 पे खेलेंगे, रन्स बनाएंगे। आई थिंक हमने कल मैच में देखा जब विराट से रन नहीं बन रहे थे, उन्होंने टाइम लिया, हालांकि थोड़ी सी इनिंग्स वो स्लो रही, बट हम आप कह सकते कि ठीक है उन्होंने 50 की। तो ये जो रन्स बनाने से जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो भी डेफिनेटली नेक्स्ट मैच में उसका फायदा होगा विराट को। एंड ऑब्वियसली जो भी खेलेगा इधर हुडा और स्टॉइनिस, जब वो ज्यादा देर तक रहेंगे विकेट पे तो उनका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बटलर का भी कल हम देख रहे थे कि पूरी विकेट स्लो थी, तो उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, सेट हो गए, फिर उन्होंने उसके बाद काफी अच्छे अच्छे स्ट्राइक रेट से गेम खेला। तो आई थिंक ये प्लान रहना चाहिए LSG के लिए कि जिसको भी आप भेज रहे हो तो 3 या 4 गेम्स तक भेजो। ऐसा मत कीजिए कि एक गेम स्टॉइनिस को भेजा, एक हुडा को भेजेंगे, पता चला आज आयुष बदुनी को भेज दिया। तो उससे क्या होता है कि जो टीम का जो मोमेंटम होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आई थिंक एवरीवन वुड लाइक कि हाँ ठीक है, एक मैच के लिए ठीक है, बट इफ यू डू एक्सपेरिमेंट ईच एंड एवरी मैच, देन वो थोड़ा बैटिंग का स्टाइल आपका एवरीथिंग चेंजेस। एंड देन जैसा वेदा बदलते कि जो रोल होता है कंफर्म नहीं होता है कि मुझे नहीं पता है अब मैं इस पोजीशन पे आऊंगा तो कितना मुझे खेलना है। तो आई थिंक जिसको भी भेजे 3 या 4 गेम्स बैक कीजिए। एब्सोल्युटली। देखिए अब रोल तो क्या डिफाइन करेंगे, वो तो कोचेस का काम है, लेकिन बैटल एक अच्छा होने वाला है। लखनऊ इतने आसानी से मैच देती नहीं है, दिल्ली कैपिटल्स कमबैक करने के लिए जानी जाती है। तो प्रेडिक्शन पे आते हैं। दामिनी सबसे पहले आप पे, इस गेम में किसके साथ जाएंगे आप, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ? मेरे लिए एक सॉलिड डिसीजन लेना मुश्किल है क्योंकि मम्मी मेरी दिल्ली की हैं, पापा मेरे लखनऊ के हैं। और इस IPL में बात करें, दोनों टीम्स ही बहुत बढ़िया खेल रही हैं। हाँ, लखनऊ ऑन पेपर्स ज्यादा टफ टीम लग रही है, बेटर टीम लग रही है। 50-50 है मेरे लिए। नहीं तो या तो पापा के साथ जाइए, मम्मी के साथ जाइए, बीच में रहेंगे तो लड़ाई हो मेरा जाएगी। मेरा दोनों को ही मुझे चाहिए मेरी जिंदगी में। दरवाजा बंद है, कोई सुन नहीं रहा है, बोल दीजिए। नहीं, घर पे भी कोई नहीं है। तो घर पे कोई नहीं तो नहीं, पापा मम्मी तो चाहिए। मैच में तो विनर तो एक ही आएगा, पापा मम्मी तो दोनों ही रहेंगे आपके साथ। सुपर ओवर। हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा है। आप सुपर ओवर की तरफ जाइए। जयदीप आपके पास? I'm going with Lucknow. I think they're strong. I think they're playing better. I think they're strong. You can't go with Lucknow. For once, she asked me before you. No, you have to go with Delhi now. No. Are you have to go with Delhi. Rima ji is with Delhi. How can you leave her? No, we just spoke about Bangalore boys. लखनऊ के साथ थी मैं कल रात को, लखनऊ के साथ सुबह दिल्ली में कैसे पहुंच जाऊंगी? अच्छा चलो, फटाफट एक टीम। Okay, Delhi. वेदा लखनऊ। Rima ji is itching to get to CSK. Delhi is itching to get to CSK. Delhi जल्दी करो, CSK पहुंचो। और आज तो मेरा कैप्टन है वहां पे, जल्दी बताओ अभिजीत। दिल्ली I'm going with Delhi. सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, आई थिंक एडवांटेज होगा। सुपर। एक सुपर ओवर की तरफ है, 2 दिल्ली की तरफ है, 2 लखनऊ की तरफ है। देखते हैं कौन जीता है मैच, लेकिन अच्छा होगा। अब सेकंड मैच की तरफ चलते थोड़ी सी बात कर लेते हैं। CSK अब हम लोग म्यूट हो जाते हैं और आप बात करिए। और मेरी बात सुनो यार, CSK में धोनी वापस आ गया है, कुछ तो अलग आज बनता है। सामने ऐसी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद जो जीत के रथ पे सवार है, जो जिनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नजर आ रहा है। सॉलिड बॉलिंग यूनिट जो पहले हम कहते हैं 160, अब 150। उनका चल भी रहा है, जो कर रहा है इज वर्किंग,
देखिए इतना अच्छा पेस अटैक है, आपको रन्स बनाने के लिए क्वालिटी बैटिंग करनी होगी, वहीं पे उनको सक्सेस मिल रहा है। अगर उनका बैटिंग इतना ज्यादा रन्स उस दिन 150 कुछ किए थे तभी भी उन्होंने जीत लिया था। ये एक एडवांटेज है सनराइजर्स को, लेकिन सामने सीएसके मास्टरमाइंड वापस आ चुका है, या कहेंगे लक वापस आ गया था। So whatever Dhoni touches now turns into gold. So with MS back at the helm, I just kind of feel that today is the day for CSK, and everything is going to work according to what he thinks. And with, you know, we can go with the fact that Sunrisers have been doing so well, so they're going to stumble today. I'm just going to go with Just like I Joydeep, just feel like do you I agree? just feel like I'm watching Sholay, you know, Jay and Viru female version, you know. दादा हम भी Watching Jay is Sholay talking, in Chennai. Abhijit, Watching Sholay in Abhijit, Jay, Chennai. some of Sholay some in of Chennai, the Jay IPL is movies. talking, and Viru ka, you know, the smile and the eyes in the Arey, next listen na, screen, Joyda. superb. Is Bolo. IPL any less than Bollywood movies? It's not. No. It's not. No, right? So today is ideal. Like for CSK to turn things around, MS being a captain, I think it's perfect. And I kind of somewhat feel like, you know, everything is going to fall in CSK's way today. दामिनी, it's सीएसके और like सनराइजर्स, after ये बैटल चलता improving- रहेगा, ये बैटल चलता रहेगा। it's सीएसके like और after कोई सनराइजर्स। डाउट नहीं है, बाद जो कोई change होता डाउट नहीं है। movie सीएसके धोनी Twist इज in बैक। the धोनी को उनका तख्ता संभाल दिया गया है, वो ही विल डू हिज जॉब। बस आंख मूंद के मैच का लुत्फ उठाइए। वेदा और दामिनी का बिल्कुल कहना सही है। अभिजीत और जॉयदीप, आपका भी, डू यू एग्री विद दीस गर्ल्स? Hyderabad. I think As they're usual, nothing new. I think No. no. I think they're a team in form. I'll just finish since I started. I think they're a team in form. I don't think Chennai are playing well, and also I cannot agree with Veda. So that's the most important reason. that you tell. Don't come up with things. I'm telling you, today everything will fall in CSK's way. Just watch. Abhijit, It's like that. Bollywood Obviously, hero. you know, Dhoni as a captain back आते हैं तो you know advantage थोड़ा होता है, opponents को भी थोड़ा सा लगता है बाप रे, you know, are those days back. But I think Sunrisers भी कुछ you know कम नहीं है. They can also you know won, I think top 4 में है. So इतना भी easy नहीं होने वाला है. हाँ, what I feel is if CSK is chasing, they may have a chance. Although you know SRH is having good team, but I think जब धोनी आता है, I mean, while batting as a second, वो थोड़ा एक hope लेता है, and he knows how to you know do this thing. But Yeah, yeah, just to add to that, advantage- Bhimaji, the only reason why I keep Sunrisers ahead is because I think the Sunrisers bowling is better, and you can survive with limited batting, but you can't survive with limited bowling. absolutely. You still need your 5 bowlers. Absolutely. And spot on. by the way, Joyda, have you watched Telugu movies like dubbed in Hindi? No, send me a list and RRR. I'll watch. Nothing happens to the hero in Telugu movies, regardless of what it is. Single-handedly, he'll do everything. So that is how Dhoni is. He's True. a proper Telugu movie star. So I think True. with Dhoni being the captain, I'll tell you one thing. The first match I went at Wankhede, CSK versus KKR. No, CSK versus KKR. There was a guy who came up with a poster saying RRR. Okay, so for the Chennai, of course, it was R for Ravindra Jadeja, R for Raidu, and R for Ruturaj Gaikwad. So let's And hope Robin the Uttapa और एक चाल लगा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? और एक चाल लगा दीजिए, Robin Uttapa भी है. एक और लगा देना, रीमा भी है चेन्नई के साथ, आप लगा दो. the question, धोनी किधर है? तो बोला कि धोनी तो सब जगह ही है, धोनी की ही मूवी है ये. चेन्नई धोनी की है. I think even if he was not the captain earlier, but I think it was still his team. So I think I'll go with Chennai today. Sorry, Dada. luck matters. No problem. No problem. चेन्नई और 5 wicket. सनराइजर्स का जो 5 मैच है ना, 5 wicket win for Sunrisers Hyderabad. 5 wicket. This is being very bold. This is being brave and bold. big यहाँ पे statement. एक चीज कहना है दामिनी, कि yes, please. धोनी को कैप्टेंसी संभाल दिया गया है. Chennai has good players and Dhoni is the mastermind who knows how to use which person where. जो जडेजा के पास जो कैपेबिलिटी थी and केन विलियमसन के लिए कुछ दामिनी, क्योंकि उनकी कैप्टेंसी की वजह से पिछले मैच में आरसीबी अगेंस्ट मैच जीते थे. हाँ, केन विलियमसन तो ऑफ कोर्स अपने नेशनल साइड को संभाल रहे हैं, कैप्टेंसी के लिए वो भी जाने जाते हैं, लेकिन धोनी के सामने वो फीके पड़ेंगे. लेकिन सीएसके का मैच है तो धोनी है तो ये शो है. जब सीएसके का नाम आएगा सिर्फ धोनी का नाम आएगा. धोनी एंड धोनी. चलो मस्त करो, खत्म हो रहा है. मुझे लग रहा है कि हम, मुझे लगता है कि मैच तक पहुंच जाएंगे.
मुस्तफिजु दौड़ रहा है बॉल लेके, भैया चुप हो चलिए जाओ। चलिए मुस्तफिज, हाँ ठीक है, मैच की तरफ चलते हैं। मैं तो भूल ही गई पहला मैच किसका था, लेकिन दोनों मैच I'll के send the बाद हम fan videos मिलेंगे। from stadium today. I'll be going to watch the match today. It's in Pune. वाओ, अगर Fine, सीएसके fine, जीतेगा तो मुझे class. डांस Only देखने class को one. मिलेगा। चलिए इसी के साथ अब मिलेंगे शो के बाद। टिल देन एंजॉय बोथ द मैचेस। आज डबल हेडर है तो आज कहीं जाना नहीं, पॉपकॉर्न ऑर्डर कीजिए और मैच देखिए। एंजॉय द गेम, टेक केयर आफ्टर द मैच। गुड लक, गुड लक। Thank you so much.